Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. Students, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 22nd of March. The session will be quite interesting and important, students, so stay tuned with us till the end. Students, here we will be talking about Prime Minister of New Zealand's visit to India. Then we will be talking about Defence Acquisition Council has approved various projects worth 54,000 crore rupees. Next thing we will be talking about is the 4th edition of NSAC meeting that was held in New Delhi and Sagarmala 2.0 that was launched. Then we will be talking about India's rank secondly in the funding globally in funding for women-led startups according to the Traction report. There are many more new students in this video, so stay tuned with us till the end. Students, we upload the daily current affairs video at 5 a.m. in the morning. Monthly current affairs, weekly current affairs and topic wise are uploaded regularly to help you prepare better for the competitive exams. Also students, if you are new to our channel, do subscribe to us. We are one-stop solution for current affairs, and share the link of this video with your friends, cousins, relatives, neighbors and let them know about this interesting platform. With national affairs, students, PM Christopher Luxon, as you can see him in the picture on the left side here, he was on an official visit to India from 16th to 20th of March. This visit aims at enhancing India and New Zealand's bilateral cooperation across multiple sectors, including trade, enhancing investment, defense technology, education, technology, agriculture, and many more. Apart from this, PM Modi and PM Christopher Luxon, they jointly inaugurated the 10th Raisiana dialogue. This dialogue was held where? In New Delhi, correct? And who was the chief guest here? As you can see him in the picture, PM Christopher Luxon was the chief guest here. Apart from this, he also joined the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, that is CDRI, and it became the 50th member of this CDRI, that is New Zealand became the 50th member of CDRI. Also, our country India and New Zealand, they are planning to launch a free trade agreement between these two countries that will enhance the trade between them. What is the capital of New Zealand? It is Wellington. It is Wellington. Next is DAC, that is Defence Acquisition Council. They have approved 54,000 crore rupees defense acquisitions, right? So first of all, this DAC, it comes under, or it is operating under, the Ministry of Defence, and these procurements will enhance the operational strength of Indian Army, Indian Navy and Indian Air Force. Also, we know that the year 2025, it is declared as the year of reforms, correct? Take a note of this. Here you can see under this Indian Army, the DAC has sanctioned the procurement of 1350 horsepower engine to replace 1000 horsepower engine in the T-90 tanks. We discussed this earlier also. Then Varunastra torpedoes will be included into the Indian Navy. And then for the Indian Air Force, DAC has approved the acquisition of airborne early warning control aircraft system, which will act as a force multipliers and significantly improving the aerial surveillance and combat effectiveness. Apart from this, for Sainik schools in Karabi in the Anglong district of Assam, Ministry of Defence has allocated 100 crore rupees. Next is Union Minister Sarbandana Sonowal has chaired the 4th edition of NSAC meeting. What is this NSAC? NSAC is your National Sagarmala Apex
committee. So this was the fourth edition of the National Sagarmala Apex Committee meeting that was held in New Delhi, and it was chaired by Sarbandana Sonowal, our Union Minister of Port, Shipping and Waterways. In New Delhi, where this meeting was held at Vigyan Bhavan, and the aim of this meeting was to review the key projects under Sagarmala initiative. What is this Sagarmala initiative? Sagarmala initiative is basically a initiative that was launched by the government of India in 2015, the aim of which was to enhance the ports, port infrastructure, port modernization, right? So under this Sagarmala, 234 ports will be modernized. 234 projects will be coming under this for modernizing the ports. And now the Sagarmala 2.0 has also been launched that will bridge the infrastructure gaps and position India as a global maritime leader. This initiative follows the successful implementation of the original Sagarmala program. Right, students, take a note of this. Then apart from this, one more thing, remember, Sagarmala Startup Innovation Initiative was also launched that will foster entrepreneurship and innovation in the maritime sector, right? Let me show you here. S212, what is this? Sagarmala Startup Innovation Initiative. Next is our country has ranked second globally in the funding for women-led startups as per the data released by Traction report, right? USA was on the first position and our country India was on the second position in globally in funding for the women-led startups, for women empowerment, correct? The global tech sector has over 69,000 women funded tech companies which have collectively contributed to almost $309 billion in funding. Our country India, we have almost 7,000 active women-led startups, accounting for almost 7.5% of all the startups in the country, contributing almost $26.4 billion. Right? Next is globally, if we see, we have discussed this data, and the top cities with the highest funding for women-led startups was San Francisco, 9.4 billion, New York, $1.9 billion, and London, $1.8 billion. Next is DPIIT. They have signed an MOU with Yes Bank and Kendrill Solutions to support the startup ecosystem in India. I repeat, DPIIT, that is your Department for Promotion of Industry and Internal Trade. This comes under the Ministry of Commerce and Industry. They have signed two memorandum of understanding. These two memorandum of understanding, one was with Yes Bank and another was with Kendrill Solutions, right? And what this will do is this will boost the startup ecosystem in India. Here more startups, more innovation, more research and development, right, will be coming into play. We will be working upon better working capital that will be provided to the businesses, more cash flow for them, correct, with this MOUs, right? If we talk about DPIIT, who is the secretary of DPIIT here? Amardeep Singh Bhatia, headquartered in New Delhi, established in 1995. Next is CDOT. They have launched Samarth Incubation Program that will support the startups in telecom and IT sector. I repeat, CDOT, that is your Center for Development of Telematics. This is a telecom research and development center that comes under the Department of Telecommunication, which comes under the Ministry of Communication. And they have launched the first cohort of the incubation program, Samarth, that will promote innovation in the telecom and IT sector. Correct? Very important. This program will support the startups and innovation that will develop in the telecom sector, right? And here, this is the first cohort. There will be multiple cohorts that will be coming, and each cohort will be having 18 startups that they will be promoting. And the selected startups under these cohorts, they will be receiving a funding of 5 lakh rupees and a 6-month office space at the CDOT campus, and also various other resources, mentorships that will help them to grow. Next is international affairs, students. Indian fintech firm Lendbox has outranked giants Aditya Birla and Titan to become the Asia's Pacific's fastest growing company. I repeat, Indian fintech firm Lendbox. Correct? It is, or we can say, first thing that UK based Financial Times and Germany based Statistica, they together released the 7th annual ranking of the 500 high growth Asia Pacific companies, right? And in this,
this company, Indian fintech firm, that is Landbox, this is a P2P NBFC. They have topped the latest ranking and has been registered with a CAGR of almost 536.64%. Correct. Its revenue increasing to $51.13 billion in 2023, and this year a total of 81 Indian firms listed on this list. Correct. So this was the 7th annual ranking of 500 high growth Asia Pacific companies, and Landbox, which is a New Delhi based P2P NBFC, secured the position here. If we see the list, Landbox from India was on the first position, second is Borong of Malaysia, third Italy of the Philippines, and fourth the Library Company of South Korea. Moving on, and one more thing, students, which organizations released the data? This data was released by Financial Times and Germany based Statista. Next is banking and finance. SEBI has cut the minimum investment in social stock exchanges instruments, and they have cut it to 1000 rupees. Maharashtra based SEBI, they have recently revised the minimum investment threshold for zero coupon, zero principal instrument on the social stock exchanges from 10,000 rupees, and they have been cut down to 1000 rupees. This decision will be effective immediately, and this will encourage the retail investors to support the non-profit organizations working in the sectors such as your healthcare and education. If you remember recently, students, recently in USA, Donald Trump has also passed an executive order where they will be demolishing and eliminating the education department. Right, coming back here, students, SEBI, they have cut the minimum investment social stock exchange instrument from 10,000 rupees to 1000 rupees. Right here, this investment reduction, as I mentioned, from 10,000 to 1000 rupees. What is the main objective here? Why this has been done is this will encourage the retail investors to participate in the funding social projects. It will increase the capital and inflow to these NPOs in the critical sector, as we mentioned, education, healthcare, and rural development. Next is economy and business. RBI survey has been recently released. They published a paper on the changing dynamics of India's remittance. Let me show you. Mumbai, Maharashtra based RBI, they published a paper that is changing dynamics of India's remittances, insights from the 6th round of India's remittance survey. What is remittance? When the money goes from India to outside, or it comes from outside to India. Correct. There are two types of remittances. One is your inward remittance and another is your outward remittance. Correct. So in their monthly bulletin, RBI, they have published a report here. Correct. As per the result from the 6th round of the India's remittance survey, there has been a gradual shift in India's inward remittance patterns as advanced economies have replaced the Gulf Cooperation Council nation as the dominant source of remittance to India. Right. According to this survey, the USA, Singapore, Canada, and Australia, they together accounted for over 50% of the India's remittance in FY24. And this reflects a shift in the migration pattern towards a skilled Indian diaspora. Apart from this, you can see USA has emerged as the largest source of remittance, accounting for over 27.7% of the total inward remittance to India. That is an increase of 23.4% compared to FY21. If we look at the state-wise distribution of the remittance, Maharashtra received the largest share of remittance, accounting to 20.5% in FY24, followed by Kerala, Telangana, and Karnataka. Also, the increase in India's share to international migrants, that means the international migrants has tripled from 6.6 million in 1990 to almost 18.5 million in 2024. Next is BPCL. BPCL is your Bharat Petroleum Corporation Limited. They have signed a quadripartite MOU with Bluge Aerospace, ANERT, and CIEL to launch world's first hydrogen-powered VTOL, vertical takeoff and landing aviation ecosystem. What is a quadripartite? That means 4 organizations: first, second, third, and fourth. So these are the 4 organizations. They signed this quadripartite agreement where they will be working to establish the world's first hydrogen-fueled vertical takeoff and landing aviation ecosystem. With this initiative, India's commitment is to achieve net zero emission by 2070. As we know, green hydrogen is a clean fuel.
right? Here you will be seeing the introduction of the green hydrogen vertical takeoff and landing aircraft that will improve the speed, efficiency, it will reduce the noise pollution, it will reduce significantly the carbon and carbon dioxide emissions into the atmosphere. Also, this BPCL, Bharat Petroleum Corporation Limited, it is the second largest Indian oil marketing company and a Fortune Global 500 company in India. Next is UK and Odisha government. They have collaborated on net zero vision for Bhubaneswar. We know that government's target is to become carbon neutral by 2070, right? And even individual states are giving their own target. So recently, the government of UK, United Kingdom, they partnered with the Energy Department of Odisha and Gridco, where they will be working out a workshop that will be on the net zero vision for Bhubaneswar in Odisha. And here TERI, that is the Energy and Resource Institute based in New Delhi, participated as the knowledge partner here, and the event focused on creating a roadmap for the city's transition to a sustainable and low carbon future. Moving on, next is AFMS, that is Armed Force Medical Services, that is an inter-service organization under the Ministry of Defense, and Bengaluru, Karnataka based NIMHANS, that is National Institute of Mental Health and Neuroscience, that operates under the Ministry of Health and Family Welfare. They have recently signed this MOU that will improve the mental health care for the military personnel and their families, right? Here focus will be on research, faculty exchanges, and also the academic activities in the mental health sector. Also, here the focus will be on post-traumatic stress disorder, on anxiety, on the depression, on the armed force personnel, as well as on their family members, right? So they will be taken care of. Next is GRSE, that is your Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited, that is a defense public sector undertaking which comes under the Ministry of Defense. They have signed a memorandum of understanding with the Public Works Department of the Northeast Indian state of Nagaland in Kohima for supplying 8 sets of double-lane modular steel bridges in Nagaland. This marks the first ever MOU between GRSE and Northeastern state that aligns with the Government of India's vision of Make in India initiative for regional development. Next students, we are talking about a veteran actor and a Padma Shri awardee, Chiranjeevi, who has been honored with the Lifetime Achievement Award at the UK Parliament. Right? So actor Chiranjeevi, who is a veteran Indian actor and a Padma awardee, K. Chiranjeevi, conferred with the Lifetime Achievement Award for Excellence in Public Services, right? Take a note of this. And the event was organized by British India Member of Parliament, Navendu Mishra. Then K. Chiranjeevi was honored with Padma Bhushan, that is the third highest civilian award, and he was honored in 2006 in the category Arts. Then in 2024, he was also honored with Padma Vibhushan, that is the second highest civilian award. Next is Austrian hydrologist Gunter Bloch has won the 2025 Stockholm Water Prize. Take a note of him, as you can see him in the picture, right? Stockholm Water Prize for the year 2025 was presented to Austrian hydrologist Gunter Bloch, right? Take a note of this. And he's a professor currently at the Vienna University of Technology in Vienna, Austria. He has been working as a part-time professor also at the University of Bologna in Italy, and he's a full-time member of the Australian Academy of Science also. Then he also received this award. If we talk about the Stockholm Water Prize award, this award is also known as the Nobel Prize of Water. This award was established in 1991. Next is appointments and resignation. Christy Coventry elected as the 10th president of IOC, that is International Olympic Committee, headquarter of which is in Lausanne, Switzerland, and this will be an 8-year long term for her, right? So Christine Coventry elected as the 10th president of the International Olympic Committee. Correct. Then one more thing, remember, this decision was taken during the 144th IOC session held in Greece, and she will be succeeding Thomas Bach, right? She will be the first woman and the first African to serve as the president of the IOC. Very important, students, take a note of this. Next is science and technology, students. World's first super solid created from light. Recently, researchers from
Italy, they have transformed into light into a super solid. That means it was also in social media very, it was very viral, right? There was a news that light has been frozen by the scientists in Italy, and this is a new form of matter where this light was transformed into a super solid for the first time, right? And this super solid, it is a rare and counterintuitive phase of matter that uniquely combines the rigidity of a crystal with the frictionless flow of a superfluid, right? It was somewhere in between that of a solid and a liquid, correct? So light was first frozen in which country? In Italy. Next is important day, students. World Sparrow Day observed on 20th of March. This day is observed basically to conserve the forest or to conserve the ecosystem for the sparrows, right? That are the house sparrows specifically. There is a theme here, a tribute to the nature's tiny messengers. Next is International Day for the Elimination of Racial Discrimination observed on 21st of March. This day is observed basically to raise awareness about the challenges that are faced by the people of African descent and all those affected by the racism and racial discrimination and exclusion. There is a theme here, 60th anniversary of the International Convention on the Elimination Day of all the racial forms of discrimination, right? This is the theme here. Next, students, that's all for the day. Now let's move to some revision part. Then we will be proceeding to the homework section. Next, students, is your homework section. First question, what is the rank of India in the Corruption Perception Index? Which edition of this Corruption Perception Index was released and organization that released it? Then tell me who secured the first position in the Corruption Perception Index, that is the least country or the country with the least corruption. Second question, tell me Logistics Performance Index. This was released. What is the rank of India here and which is the country with first rank? Then third question, tell me recently, if I ask you which IIT partnered with ISRO to develop semiconductor for space, name that semiconductor chips also. Then fourth question, students. Fourth question is cyclone exercise. This exercise is held between which two countries and right? And where was this exercise held? Then fifth question, Yash Hush. This is a product developed by Hindustan Aeronautics Limited. Can you tell me what is this Yash Hush? Right? And just give me the name, right? So these are your 5 homework questions, students. I need maximum participation from all the students watching this video. Which among the following is the word of the year 2024 chosen by the Cambridge Dictionary in November 2024? So which is that word? It is manifest, right? And this has nearly 1,30,000 lookups in their website. The word gained popularity across mainstream media, self-help communities and social media platform. And this manifest, it reflects to the act of imagining one's desired achievements with the belief that doing so can increase the chances of success. Next, Rumana Sinha Sehgal, a mentor at Hyderabad, Telangana, based in T-Hub, and Akshay Deshpande, the associated startup founder of Switchco, have been recently honored with the Karamveer Chakra Award for 24-25. Which organization instituted the Karamveer Chakra Awards along with Indian Confederation of NGOs? So, which is that organization? It is United Nations. These awards were given during the 13th edition of the REX Conclave, that was a conclave which was held from 25th November to 26th of November in Noida, Uttar Pradesh. Next, which airline was recently awarded the 2024 Airline of the Year by Center for Aviation at its 2024 Global Aviation Awards for Excellence in Belgrade, Serbia? So, which is that organization? It is Indigo. Take a note of this, and Indigo was named as the 2024 Airline of the Year. Next, India was honored with the ISSA Dash Award for Asia Pacific 2024 Award in the Regional Social Security Forum in Riyadh, Saudi Arabia. So it is for Good Practice Award. Next, who has been recently awarded the Turner Prize 2024 for the thought-provoking exhibition Alter Altar? So who has been awarded here Turner Prize? Jasleen Kaur was awarded here with the Turner Prize, and the other artists who were also shortlisted for this. Here, Jasleen Kaur's exhibition is on the display at the
Tate Britain until 2025 alongside various other shortlisted candidates. Next, during the 29th session of the Conference of the State Parties in The Hague, Netherlands, in November, the Indian Chemical Council received the 2024 Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, the Hague Award, for their contribution to what? For their contribution to chemical disarmament. Next is which company has been recently selected as one of the Forbes India's Select 200 companies with large global business potential at the D Globalist Entrepreneur Mobility Summit 2024 in New Delhi. It is your Octanom Tech Private Limited, and this accolade is expected to accelerate the Octom's tech global growth, paving a way new partnership for various leadership in financial technology innovation. Next, which infantry battalions have been recently awarded the President's Color from the General Upendra Dwivedi, the Chief of Army Staff. It is your mechanized infantry that received this President's Color. Next, who was recently honored with the Rochdale Pioneers Award 2024 by the International Cooperative Alliance in recognition of the significant contributions to advancing the cooperative sector in India. So, which is it? It is Dr. Uday Shankar Awasthi. Next, who will be conferred with the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2024 in recognition of the exemplary contributions to human right, peace and equality. It is Veronica Michael Bachelet Zeria, right? And she has strongly advocated for gender equality and the rights of the most vulnerable sections of the populations globally. Next, which word of the year was chosen as the word of the year 2024 by Merriam-Webster? So, polarization is the word of the year 2024 as selected by Merriam-Webster. Next, who has recently awarded with the 2024 Champions of the Earth Award by United Nations? So, Madhav Gadgil was honored with this Champions of the Earth Award. This award is given by UNEP, United Nations Environment Program, and this is for the conservation efforts, right, for the protection of environment, focusing on the combating land degradation, drought, desertification, and coming up with various challenges. Next, which state police has recently awarded the inaugural Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry FICCI Drone Award in the training and capacity building category? So, which state police was recently awarded here? It was Karnataka State Police that was awarded. Next, who has recently won the 2024 Women's Tennis Association Player of the Year Award? So, Aryna Sabalenka of Belarus has recently won this award. She is currently ranked world number 1 women tennis player, right? And she has been awarded with this Player of the Year award. Next, the Honorable President of India Draupadi Murmu Ma'am conferred the National Panchayat Award upon 45 awardees, including 42 panchayats and 3 capacity building institutes organized by the Ministry of Rural Development. Which of the following is not the award category in the National Panchayats Award 2024? So, which is among them? It is Swachh Gram Panchayat Puruskar is not among the awards there. Next, which of the following are correct with respect to the UNESCO Asia Pacific Award for Cultural Heritage Conservation in December given in Bangkok, Thailand? If we look at the options here, all the 3 options are rightly mentioned. Next, which airline has recently received the 2 distinguished global accolades for its ongoing transformation and dedication to service excellence? Which is it? It is Air India Limited. And here, important, take a note of this. Next is in January, Elon Musk X Corp. They partnered with Dash to launch the first digital wallet and P2P payment service named X Money, aimed to create everything application. So X Corp, they are partnered with Visa, and they together will be launching a digital wallet as well as a P2P payment service, and this will coming under the everything application of X. Next, 3 West African countries, Republic of Mali, Burkina Faso and Republic of Niger, they withdrew from the Regional Economic Bloc Dash in January 2025. So, they withdrew from the Regional Economic Bloc Economic Community of West African States, right? And they withdrew this from in January 2025. This is your ECOWAS, Economic Community of West African States. Right, ECOWAS, they have advised its remaining 12 members to keep recognizing the passport of these 3 countries and continue to trade with them until further instructions are given.
Next, identify the company that recently joined United Nations Global Compact to advance commitment to becoming a global leader in sustainable aviation. It is your GMR Airports Limited. Take a note of it. Next, name the 13th joint military exercise between Indian Army and Maldives National Defence Force, which commenced on 2nd Feb to 15th of Feb in Maldives. It is equivalent, right? This is the name of that 13th joint military exercise. Next, identify the country that recently became the first Latin American nation to withdraw from China Belt and Road Initiative. It is Panama. Next, in Feb, UNICEF along with Dash, they have launched a national roadmap to address road traffic injuries among children and adolescents in India. It is World Health Organization Collaborating Center, right? They along with UNICEF have launched a national roadmap to address the road traffic injuries among the children and adolescents in India. Next is name the organization that recently in Feb 2025 featured in India in honor roll for paying its regular budget assessments within the specified 30-day period. It is United Nations. Correct? Take a note of this. Next, Indian Navy, they participated in the International Fleet Review 2025 and the 5th Multilateral Naval Exercise Komodo from 15 to 22nd of Feb. Name the country that hosts both the exercise. It is Bali, Indonesia. This is the exercise that hosts both these exercise, and in here INS Shardul took part in this exercise. Next, which country is set to host the BRICS Summit 2025 scheduled for 6th to 7th of July 2025? It is Brazil, right? Brazil is the country that is set to host the BRICS Summit 2025. Next, name the country that became the newest member of OPEC Plus in Feb 2025, expanding the coalition of 22 major oil producing nations following an invitation in 2023. It is Brazil. Next, India was recently elected as the vice president of which organization in Feb during the first General Assembly in Singapore, marking its transition from an NGO to an international governmental organization. So, India became a vice president of International Organization for Marine Aids to Navigation. That is IALA. Next, mention the country that assumed the chairmanship of Bay of Bengal Program Intergovernmental Organization from Bangladesh during the 13th Governing Council meeting on 21st of Feb. If we look at the option, it is our country, India, that has recently assumed the chairmanship here. Next, which international observance marked the 10th anniversary celebrated by UNESCO with the campaign Imagine a World Where More Women in Science on Feb 11, 2025. It is International Day of Women and Girl in Science. Correct? And United Nations General Assembly declared 11th of Feb as International Day of Women and Girls in Science in 2015, and there is a hashtag, there is every voice in science. Next, according to the Financial Action Task Force second plenary report, that is Mexico, Elisa de Anza Mazo's 2-year presidency in Paris, France in Feb, which of the following statement are correct? If we look at the options, option A and C are right, B is wrong. B is saying that Philippines was added to the FATF list and Laos and Nepal, they were removed from the list. So no, the Philippines, it was removed from the list, whereas Laos and Nepal, they were added to this list here. They were added to the list here. फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 22 मार्च के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हम डेली करंट अफेयर्स सुबह 5 बजे अपलोड कर देते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखा करो, आपकी लर्निंग में काफ़ी है बेनिफिट मिलेगा। देन अभी न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के विजिट पे थे। इसके बाद हम बात करेंगे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कुछ 54,000 करोड़ रुपये के प्रोडक्ट्स अभी बाय करे हैं तीनों फोर्सेज के लिए, उनको डिस्कस करेंगे। देन हम बात करेंगे सागरमाला इनिशिएटिव की, उसके अंडर अभी कुछ और लॉन्च किया गया, उसको डिस्कस करेंगे। देन इंडिया की क्या रैंक रही, अगर हम बात करें वीमेन लेड स्टार्टअप्स में, उनकी फंडिंग में, तो इंडिया कौन सी स्टेप पोजीशन पे स्टैंड करता है। एंड इसके अलावा काफ़ी और न्यूज़ हैं स्टूडेंट्स, एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी अच्छा सेशन रहने वाला है आप सभी की लर्निंग के लिए। अगर आप नए जुड़े हैं स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब जरूर करना एंड शेयर द लिंक ऑफ दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, cousins, relatives, neighbors, and let them know about this interesting platform. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana.
We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. So students, we have started a new initiative that is of handwritten notes. It is helpful to understand the news daily, time saving and very useful for your revision. We aims to cover 15 questions via handwritten notes in upcoming bank exams. These handwritten notes are available on daily current affairs content PDF at our mobile application and website careerscloud.in. Only our Crack Current Affairs subscribers will be able to access these handwritten notes. A sample PDF of the handwritten notes will be available in the description. नेशनल अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, ये हैं क्रिस्टोफर लक्सन, ये प्राइम मिनिस्टर हैं न्यूजीलैंड के। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, राइट। अभी ये इंडिया के विजिट पे थे 16 से 20 मार्च तक। यहाँ पे हमने देखा इन्होंने और इंडिया के बीच में कई सारे सेक्टर्स के ऊपर काम किया जाएगा, जैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, स्पेस, स्पोर्ट्स, हर सेक्टर में यहाँ पे देखेंगे इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में यहाँ पे बेटर होता हुआ देखेगा। इवन इन दोनों पीएम मोदी एंड क्रिस्टोफर लक्सन, इन दोनों के द्वारा मिलकर अभी 10वां राइजाना डायलॉग को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया न्यू दिल्ली में, एंड चीफ गेस्ट कौन बने? क्रिस्टोफर लक्सन। इसी के साथ साथ न्यूजीलैंड अभी मेंबर बन गया है, 50वां मेंबर बना है CDRI का। CDRI क्या है? कोलिएशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इवन इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हम देखेंगे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की भी बातें शुरू हो गई हैं कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में हम ट्रेड को फ्री कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। इन्होंने अभी रिसेंटली अप्रूव किए 54,000 करोड़ रुपए की डील, राइट। इस डील में आ जाते हैं आपके वेरियस ऑपरेशनल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए वेरियस इक्विपमेंट्स फॉर इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स। आप जानते हैं 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स भी घोषित किया गया था, राइट। तो यहीं पे सबसे पहले अगर हम देखें इंडियन आर्मी के लिए 1000 हॉर्स पावर के जो इंजन्स थे T-90 टैंक्स को, उनको रिप्लेस किया जाएगा 13,150 हॉर्स पावर के इंजन्स के साथ। इंडियन नेवी की बात करें तो वरुणास्त्र टॉर्पिडोज यहाँ पे प्रोक्योर की जाएंगी एंड इनको यूज़ किया जाएगा। देन इंडियन एयरफोर्स की बात करें तो इनके लिए एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को लाने की बात की गई। फिर ये तो हो गई 3 फोर्सेस का। इसके अलावा सैनिक स्कूल जो कि करबी अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में है असम में, उनके लिए 100 करोड़ रुपए यहाँ पे अलोकेट किए गए। नेक्स्ट आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल जी। इन्होंने चेयर किया 4th एडिशन ऑफ NSAC मीटिंग। ये NSAC क्या है? नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी की ये मीटिंग रही, राइट। एंड सबसे पहले चीज याद रखेंगे स्टूडेंट्स, एक इनिशिएटिव था सागरमाला इनिशिएटिव, 2015 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इनका मेन एम था कि हम पोर्ट की कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, कैसे पोर्ट्स को मॉडर्न बनाएं, कैसे कनेक्टिविटी बढ़ाएं, कैसे वहाँ पे टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सके एंड पोर्ट्स को, इंडिया के पोर्ट्स को ग्लोबल स्केल के, ग्लोबल लेवल के पोर्ट्स बनाया जा सके, राइट। 234 पोर्ट्स प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए थे 2.91 लाख करोड़ की मदद से। ये था सागरमाला 1 2015 में। अब सागरमाला 2.0 इनिशिएटिव यहाँ पे लॉन्च किया गया है यूनियन मिनिस्टर सरबंदना सोनोवाल जी के द्वारा कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के गैप्स हैं उनको पूरा किया जा सके एंड ग्लोबल स्केल पे इंडिया को ले जाया जा सके, राइट। तो इसी की अभी 4th मीटिंग थी नेशनल सागरमाला एपेक्स कमेटी मीटिंग, जो कि अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सरबंदना सोनोवाल हमें देखने को मिली, राइट स्टूडेंट्स। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, हम बात करेंगे इंडिया की। इंडिया 2nd पोजीशन पे आ जाता है ग्लोबली इन फंडिंग फॉर वीमेन लेड स्टार्टअप्स। ये ट्रैक्सन की एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसमें बताया कि जो वीमेन लेड स्टार्टअप्स हैं उसमें जो फंडिंग मिलती है, तो कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा फंडिंग देखने को मिल रही है? USA में। USA के बाद आ जाता है इंडिया में सबसे ज़्यादा हमें फंडिंग देखने को मिलती है वीमेन लेड स्टार्टअप्स। अगर आप देखेंगे कि वीमेन एम्पावरमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, वीमेंस को साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, STEM कोर्सेज में प्रमोट करने का बहुत काम किया जाता है आज के टाइम पे इंडिया में, राइट। तो ये क्या है कि वीमेन पार्टिसिपेशन हम लेबर फोर्स में बढ़ा सकें, ठीक है।
टेक अ नोट ऑफ दिस स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। ये कुछ डाटाज हैं कि ग्लोबली अगर हम देखें टेक सेक्टर में 69,000 वीमेन फाउंडेड टेक कंपनीज हैं, जिसमें से 7,000 इंडिया में आ जाती हैं एंड दे अकाउंट फॉर 7.5% ऑफ ऑल द स्टार्टअप्स इन द कंट्री विद अ टोटल कैपिटल मोबिलाइजेशन ऑफ $26.4 बिलियन। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स फिर डीपीआईआईटी। इन्होंने अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया है येस बैंक के साथ एंड कैंडल सॉल्यूशंस के साथ। तो 2 एमओयू हो गए येस बैंक एंड कैंडल सॉल्यूशंस के साथ, ताकि स्टार्टअप इकोसिस्टम को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके, उनकी हेल्प की जा सके। अगर उनको फंडिंग की ज़रूरत है तो फंडिंग प्रोवाइड की जा सके, उनके जो डेली एक्सपेंसेस के लिए जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो उनके पास रह सके, राइट। उनको अगर क्रेडिट एक्सेस चाहिए, वर्किंग लोन चाहिए, वो उनको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जा सके, राइट। तो उनको कोई कमी यहाँ ना देखने को मिले। एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी अगर कोई एमएसएमई है, कोई इकोसिस्टम है, कोई स्टार्टअप है, तो उनकी यहाँ पे हेल्प की जा सके बेटर टेक्नोलॉजी से, बेटर रोबोट से, राइट, ऑटोमेटिव पार्ट से, करेक्ट। इसलिए इनकी यहाँ पे हेल्प करने की बात की जाएगी। और अब आप देख रहे हैं एआईसी ऑटोमेशन भी आता जा रहा है, तो ऑटोमेशन का भी यहीं यूज़ करने का काम किया जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं सी डॉट। इन्होंने समर्थ, ये एक इंक्यूबेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया है टू सपोर्ट स्टार्टअप्स इन द टेलीकॉम एंड आईटी सेक्टर। तो जो टेलीकम्युनिकेशन एंड आईटी सेक्टर में जो भी छोटे स्टार्टअप्स हैं, राइट, इंक्यूबेशन प्रोग्राम उनके लिए यहाँ पे लॉन्च किया गया। ये इंक्यूबेशन प्रोग्राम क्या है कि उनको जगह दी जाएगी यहाँ पे बेसिकली कि वो अपना काम कर सकें। एंड पहला एक कोहोर्ट लॉन्च किया गया, या इसका पहला कोहोर्ट लॉन्च किया गया। इसके अंदर कई सारे स्टार्टअप्स आएंगे, उन स्टार्टअप्स में से कुछ स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया जाएगा, राइट। एंड उन स्टार्टअप्स को यहाँ पे इंक्यूबेशन प्रोवाइड कराया जाएगा, 5 लाख रुपए का ग्रांट दिया जाएगा एंड ऑफिस स्पेस भी प्रोवाइड किया जाएगा सी डॉट के ऑफिस में, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के ऑफिस में, राइट। उसके साथ में ही कि यहाँ पर वो अपने स्टार्टअप को ग्रो कर सकते हैं, राइट। एंड उनको हेल्प भी किया जाएगा, मेंटरशिप भी यहाँ पे प्रोवाइड कराने का ये काम करेगा। मूविंग ऑन, इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें तो इंडियन फिनटेक फर्म लैंडबॉक्स, राइट, ये न्यू दिल्ली बेस्ड एक P2P NBFC है, राइट। इन्होंने आउटरैंक किया आदित्य बिरला एंड टाइटन को टू बिकम द एशिया पैसिफिक्स फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, राइट। अभी एक डाटा रिलीज किया गया था 2 ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मिलके, एक तो है यूके की फाइनेंशियल टाइम्स एंड जर्मनी की स्टेटिस्टा। इन दोनों के द्वारा मिलके 7वां एनुअल रैंकिंग ऑफ 500 हाई ग्रोथ एशिया पैसिफिक कंपनीज का डाटा रिलीज किया गया, जिन्होंने से लैंडबॉक्स जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड P2P NBFC है, इन्होंने टॉप किया इस लिस्ट में विद अ CGR ऑफ ऑलमोस्ट 536%। मतलब सालाना ये 5 टाइम्स से ग्रो करते हुए यहाँ पे हमें दिखी है। यहाँ पे आप कंपनी देख सकते हैं, लैंडबॉक्स इंडिया की फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड बोरोंग, थर्ड इटली एंड फोर्थ लाइब्रेरी कंपनी। मूविंग ऑन स्टूडेंट, नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बैंकिंग एंड फाइनेंस पे आ जाते हैं। हम बात करेंगे सेबी ने अभी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो कि सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस इंस्ट्रूमेंट्स में होगी उसको कट कर दिया है। पहले ये 10,000 होती थी, अब इसको कम करके कर दिया है 1,000 रुपीज़, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेगा। इससे होगा क्या कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो सोशल प्रोजेक्ट्स में फंड करने से कतराएंगे नहीं, अब इसमें इन्वेस्ट करेंगे, राइट। एंड इससे जो वर्किंग फ्लो कैपिटल है, जैसे एजुकेशन में, हेल्थ केयर सेक्टर में, इसमें हमें पैसे का इनफ्लो होता हुआ दिखेगा। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करते हुए दिखेंगे, राइट। तो सेबी ने जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है सोशल स्टॉक एक्सचेंजेस इंस्ट्रूमेंट्स में 10,000 रुपये से घटा के अब उसको 1,000 रुपये कर दिया, राइट। इससे क्या है, जो स्मॉल इन्वेस्टर्स है उसके लिए ये सेगमेंट इन्वेस्टेबल हो गया, अफोर्डेबल हो गया। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। तो आरबीआई का एक सर्वे रिलीज किया गया जिसमें बताया यूएस, यूके, सिंगापुर, इन्होंने ओवरटेक किया गल्फ कॉरपोरेशन नेशंस, जीसीसी नेशंस को एज द इंडियाज टॉप रेमिटेंस हब्स इन FY24। देखो, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के जो नेशंस है ना, पहले ये डोमिनेंट सोर्सेज थे रेमिटेंस टू इंडिया। रेमिटेंस 2 तरह की होती हैं, एक होती है इनवर्ड रेमिटेंस, एक होता है आउटवर्ड रेमिटेंस, राइट। इनवर्ड रेमिटेंस जब बाहर की कंट्री से इंडिया में पैसा आए, आउटवर्ड जब इंडिया से बाहर पैसा जाए, करेक्ट। तो अगर हम इनवर्ड रेमिटेंस की बात करें तो यूएस, यूके एंड सिंगापुर ये टॉप कंट्रीज हैं अब इनवर्ड रेमिटेंस की फ्रॉम द ग्लोब। अगर यहाँ पे बात करें तो अभी आरबीआई, मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड आरबीआई के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी जो कि छठा राउंड था ऑफ इंडियाज रेमिटेंस सर्वे का। यहाँ पे इंडिया के रेमिटेंस की बात की गई जिसमें बताया गया कि गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल नेशंस, राइट, ये डोमिनेंट सोर्सेज ऑफ रेमिटेंस होते थे, अब इनको रिप्लेस किया गया है किनके द्वारा, यूएसए, सिंगापुर, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। एंड ये कंट्रीज मिलकर 50% ऑफ द इंडिया की रेमिटेंस को मतलब बनाते हैं। अगर यहीं पे अगर हम देखें, यूएसए एमर्ज एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एमिटेंस
जो कि है 27.7% ऑफ टोटल इनवर्ड रेमिटेंस टू इंडिया इन FY25। एंड इंडिया इकलौता ऐसा कंट्री है जो 100+ बिलियन डॉलर का रेमिटेंस रिसीव करता है। स्टेट में देखें तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रेमिटेंस देखने को मिला 20.5% का, फॉलोड बाय केरला, देन तेलंगाना, देन कर्नाटका। मूविंग ऑन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आ जाते हैं BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन्होंने क्वाडपार्टाइट एग्रीमेंट साइन किया है। क्वाडपार्टाइट क्या होता है? 4 ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ MOU साइन किया गया। पहली है BPCL, दूसरी है ब्लूज एरोस्पेस, तीसरी है एनर्ट ANERT एंड चौथी आ जाती है CIEL। इनके साथ मिलके पहला हाइड्रोजन फ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एविएशन इकोसिस्टम को यहाँ पे बनाया जाएगा, जिससे क्या होगा, जो एक तो टाइम बचेगा 2 लोकेशन के बीच में जाने में, इससे स्पीड बढ़ेगी, एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, नॉइस रिडक्शन होगा। इसी से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन जो एमिशन होता था उसका इन्वायरमेंट में नहीं होगा, वो काफ़ी बेनिफिशियल रह जाएगा। क्योंकि अगर हम ग्रीन हाइड्रोजन को बर्न करते हैं तो जो एंड फ्यूल होता है वो क्या होता है? वाटर। ठीक है। BPCL की बात करें, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट इंडियन ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, जो कि एक फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी भी है। नेक्स्ट आ जाते हैं UK, यूनाइटेड किंगडम एंड ओडिशा गवर्नमेंट के बीच में भी साइन हुआ नेट जीरो विजन को अचीव करने के लिए इन भुवनेश्वर, राइट। भुवनेश्वर ओडिशा की स्टेट, जैसे देखो इंडिया का टारगेट है कि 2070 तक हमें कार्बन न्यूट्रल होना है, तो ऐसे ही इंडिया की स्टेट्स के द्वारा भी छोटे छोटे टारगेट सेटअप किए गए हैं, जिनको अचीव करने में यहाँ पे ओडिशा की स्टेट को अचीव करने में कौन मदद करेगा? UK गवर्नमेंट इनकी यहाँ पे हेल्प करेगी। एंड TERI जो कि न्यू दिल्ली बेस्ड नॉलेज पार्टनर रहेगा इनका, जो कि है एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आ जाते हैं AFMS, जो कि है आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज। ये एक इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, बेस्ड इन निमहंस, राइट। तो AFMS एंड निमहंस, इनके द्वारा MOU साइन किया गया ताकि मेंटल हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके आर्म फोर्स इंडिविजुअल्स को एंड उनके फैमिली मेंबर्स को, राइट। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, राइट, कोई पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस चल रहा हो, करेक्ट, तो ऐसी सिचुएशंस में मेंटली जो भी प्रॉब्लम्स हैं, राइट, मेंटली लोगों की इन आर्म फोर्स पर्सनल्स की एंड उनकी फैमिलीज को एक मेंटल तौर पे हेल्प करने के लिए ये रिसेंटली MOU साइन होता हुआ हमें दिखा। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर GRSE, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया PWD नागालैंड के साथ, जो कि है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ऑफ नागालैंड, फॉर मॉड्यूलर स्टील ब्रिजेस। 8 सेट्स ऑफ डबल लेन मॉड्यूलर स्टील ब्रिजेस को बनाया जाएगा नागालैंड में, उसके लिए यहाँ पे MOU हमें दिखा। एंड मेक इन इंडिया क्या बनाया जाएगा इसको। नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, अभी रिसेंटली याद रखेंगे एक्टर के चिरंजीवी, राइट, काफ़ी फेमस इंडियन एक्टर हैं। इनको पद्मा श्री से सम्मानित किया जा चुका है, पद्मा भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, पद्मा विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है, एंड पद्मा भूषण, आई करेक्ट फिर से बोल रहा हूँ, पद्मा भूषण एंड पद्मा विभूषण से इनको सम्मानित किया जा चुका है। एंड इनको अभी रिसेंटली लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस थ्रू कल्चरल लीडरशिप से सम्मानित किया गया फ्रॉम ब्रिज इंडिया ड्यूरिंग अ सेरेमनी, जो कि UK के पार्लियामेंट में हुई थी, नोन एज द हाउस ऑफ कॉमन्स इन लंदन UK। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। पद्मा भूषण जो कि इंडिया का 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उनको इनसे 2006 में सम्मानित किया गया था इन द कैटेगरी ऑफ आर्ट्स। देन पद्मा विभूषण से इनको 2024 में सम्मानित किया गया, सेम इन द कैटेगरी ऑफ आर्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन हाइड्रोलॉजिस्ट गंटर ब्लॉशल। इन्होंने अभी स्टॉकहोम वाटर प्राइज को जीत लिया 2025 के लिए। इसी को हम बोलते हैं नोबेल प्राइज इन वाटर या नोबेल प्राइज ऑफ वाटर, राइट। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज फॉर द ईयर 2025 को किन्होंने जीता? वो है गंटर ब्लॉश को, जो कि ऑस्ट्रेलियन हाइड्रोलॉजिस्ट हैं। टेक अ नोट ऑफ द स्टूडेंट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक प्रोफेसर है वियना यूनिवर्सिटी में इन वियना ऑस्ट्रिया, राइट। ये पार्ट टाइम प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ ब्लोगना में इन इटली, एंड ये एक फुल टाइम मेंबर भी है ऑस्ट्रियन अकेडमी ऑफ साइंसेज में। एंड 1991 से ये अवार्ड दिया जा रहा है बाय द स्टॉकहोम वाटर फाउंडेशन। नेक्स्ट आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशन पे। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये हैं क्रिस्टी कोवेंट्री, ये इलेक्ट की गई हैं 10वीं प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, राइट। 8 साल तक ये इस पोजीशन में रहेंगी, राइट, एंड ये 10वीं प्रेसिडेंट बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है IOC का? ये है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में, राइट। एंड ये वो पहली वीमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन बनी जो सर्व करेंगी एज द प्रेसिडेंट ऑफ द IOC। ये डिसीजन लिया गया ड्यूरिंग 144th IOC सेशन, जो कि ग्रीस में हुआ था। ये सक्सीड करेंगी थॉमस बैक को। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक पे स्टूडेंट्स। अभी इटली के रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट के द्वारा लाइट को फ्रीज किया गया है एंड लाइट को फ्रीज करके ये एक सुपर सॉलिड बनाया गया। ये एक वो स्टेट है जो कि सुपर सॉलिड भी है, राइट, एंड आपका लिक्विड जैसा फ्रिक्शनलेस फ्लो भी देता है ये, करेक्ट। तो इसके बीच में ये सुपर सॉलिड अचीव की गई एंड इन सिंपल टर्म्स बोले तो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ये फैला था, वायरल हुआ था कि इटली के रिसर्चर्स ने लाइट को फ्रीज कर दिया है, इसीलिए इसको सुपर सॉलिड स्टेट यहाँ पे बोला गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पे स्टूडेंट्स। वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। स्पैरो के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, उनके हैबिटेट को कंजर्व करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है एंड 50 से भी ज़्यादा कंट्रीज में इसको ऑब्जर्व किया जाता है। अ ट्रिब्यूट टू नेचर्स टाइनी मैसेंजर, ये यहाँ पे थीम रहेगी इस वर्ल्ड स्पैरो डे की। पहली बार 2010 में इस डे को ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। 21 मार्च को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। ये ऑब्जर्व किया जाता है ताकि जो भी अफ्रीकन डिसेंट के पीपल हैं उनके खिलाफ जो भी रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है उसको रोका जा सके, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराई जा सके। 60वां एडिशन था इस बार इस डे का, पहली बार 7वां एडिशन था और इसकी थीम रहेगी 60th एनिवर्सरी ऑफ द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। Rumana Senasegal, a mentor at Hyderabad, Telangana, based in T-Hub, and Akshay Deshpande, the associated startup founders of Switchco, have been recently honored with the Karamveer Chakra Awards for 2024-25, which organization instituted the Karamveer Chakra Award along with the I-Congo। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? वो है यूनाइटेड नेशंस। नेक्स्ट, किस एयरलाइन ने अभी रिसेंटली अवार्ड दिया गया किस एयरलाइन को 2024 का एयरलाइन ऑफ द ईयर बाय सेंटर फॉर एविएशन एट इट्स 2024 ग्लोबल एविएशन अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन बेलग्रेड, सर्बिया। तो वो है इंडिगो को ये अवार्ड यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडिया वॉज रिसेंटली ऑनर्ड विद द ISSA डैश अवार्ड फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2024 अवार्ड इन द रीजनल सोशल सिक्योरिटी फोरम इन रियाद, सऊदी अरेबिया। सो फॉर गुड प्रैक्टिस इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, who has been recently awarded the Turner Prize for the thought-provoking exhibition Alter Altar। तो वो है जसलीन कौर, इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, राइट, विद दिस टर्नर प्राइज। नेक्स्ट आ जाते हैं, ड्यूरिंग द 29th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टीज इन द हॉज नीदरलैंड ये हुई थी। इंडियन केमिकल काउंसिल ने रिसीव किया 2024 का ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविजन ऑफ केमिकल वेपन्स द हॉज अवार्ड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर व्हाट? दिस इज फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर द केमिकल डिसआर्ममेंट, की मतलब केमिकल वेपन्स को प्रमोट ना किया जा सके। नेक्स्ट आते हैं, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली सेलेक्ट किया, किस कंपनी को सिलेक्ट किया गया एज वन ऑफ द फोर्ब्स इंडिया सेलेक्ट 200 कंपनीज विद लार्ज ग्लोबल बिजनेस पोटेंशियल एट द डी ग्लोबलिस्ट एंटरप्रेन्योर मोबिलिटी समिट, जो कि न्यू दिल्ली में हुई, राइट। तो ये ऑक्टेनॉम टेक प्राइवेट लिमिटेड को यहाँ पे सेलेक्ट किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच इन्फेंट्री बटालियंस हैव रिसेंटली अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट्स कलर बाय जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। तो मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को यहाँ पे प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु वाज ऑनर्ड विद द रॉशडेले पायनियर्स अवार्ड 2024 बाय इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस इन रिकॉग्निशन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एडवांसिंग द कोऑपरेटिव सेक्टर इन इंडिया। तो कौन रहेंगे वो है डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु विल बी कन्फर्ड विद द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024 इन रिकॉग्निशन ऑफ द एग्जाम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द ह्यूमन राइट, पीस एंड इक्वेलिटी। वो है वेरोनिका माइकल बैशलेट ज़ेरिया। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच वर्ड वॉज रिसेंटली चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2024 बाय मैरियम वेबस्टर। तो इनके द्वारा ब्रेन रॉट को यहाँ पे वर्ड ऑफ द ईयर चूज़ किया गया था। ब्रेन रॉट होता है जब आप बहुत ज़्यादा एक काम में लग जाते हैं, राइट, फुल अटेंशन होके पूरा डेडिकेशन से, तब आपका माइंड एक टाइम के बाद थकने लग जाता है, राइट, यू गेट टायर्ड ऑफ इट, दैट इज़ नोन एज योर ब्रेन रॉट, राइट। आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपका कोऑर्डिनेशन, आपका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली अवॉर्डेड विद द 2024 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड बाय यूनाइटेड नेशन। तो किनको सम्मानित किया गया? माधव गडगिल को यहाँ पे सम्मानित किया गया 2024 के चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच स्टेट पुलिस हैज़ रिसेंटली अवॉर्डेड द इनॉग्रल फेडरेशन अवॉर्डेड द इनॉग्रल फिकी ड्रोन अवार्ड। इस ये फिकी ड्रोन अवार्ड का पहला एडिशन था इन ट्रेनिंग एंड
कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए किस स्टेट पुलिस को सम्मानित किया गया? तो कर्नाटका स्टेट पुलिस को यहाँ सम्मानित किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ रिसेंटली वन द 2024 की वीमेंस टेनिस एसोसिएशन प्लेयर ऑफ द ईयर? वो है एरिना सेबलेंका, बेलारूस की प्लेयर हैं, वर्ल्ड की नंबर 1 प्लेयर हैं ये, और इन्होंने WTA प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में जीता। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम ने कन्फर किए नेशनल पंचायत अवार्ड अपॉन 45 अवार्डीज इंक्लूडिंग 42 पंचायत एंड 3 कैपेसिटी बिल्डिंग इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द अवार्ड कैटेगरी इन द नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2024? तो इनमें से कौन सी नहीं है? वो है आपका स्वच्छ ग्राम पंचायत पुरस्कार नहीं है, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 2024 के यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन इन दिसंबर, बैंकॉक, थाईलैंड? तो इनमें से तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके ठीक रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच एयरलाइन हैज़ रिसेंटली रिसीव 2 डिस्टिंग्विश्ड ग्लोबल एक्कोलेट्स फॉर इट्स ऑनगोइंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेडिकेशन टू सर्विस एक्सीलेंस? तो किनको? वो रहेगी आपकी एयर इंडिया को। नेक्स्ट, किस विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ब्रेन रॉट को यहाँ पे वर्ड ऑफ द ईयर अभी चूज किया गया था, राइट? टेक अ नोट ऑफ दिस। अच्छा, यहाँ पे वो स्टूडेंट्स एक चेंज कर लेंगे, मैंने अभी वर्ड ऑफ द ईयर भी डिस्कस किया था, ये चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर मैरियम वेबस्टर के द्वारा पोलराइजेशन वर्ड को चूज किया गया, ब्रेन रॉट को नहीं, राइट? चेंज कर लेंगे, पोलराइजेशन वर्ड ऑफ द ईयर बाय मैरियम वेबस्टर है, राइट? मैरियम वेबस्टर के द्वारा पोलराइजेशन वर्ड रहेगा। एंड यहाँ पर अगर हम देखें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ब्रेन रॉट यहाँ पे वर्ड ऑफ द ईयर रहेगा। नेक्स्ट, हु वाज ऑनर्ड विद द 2024 के जमशेदजी टाटा अवार्ड बाय द इंडियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी एट ISQ एनुअल कॉन्फ्रेंस 2024 रिसेंटली हेल्ड इन बेंगलुरु, कर्नाटका? तो किरण मजूमदार शॉ को ऑनर किया गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विनर्स ऑफ साहित्य अकेडमी अवार्ड्स अनाउंस्ड बाय साहित्य अकेडमी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर? ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तो बिल्कुल सही है, ए गलत है। कह रहा है कि साहित्य अकेडमी ने अनाउंस किए विनर्स ऑफ द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स इन 24 इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग इंग्लिश। तो नहीं, 24 नहीं, 21 इंडियन लैंग्वेजेस में। नेक्स्ट आ जाते हैं, ESIC एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इन्होंने बैक किए 4 अवार्ड्स एट द रीजनल सोशल सिक्योरिटी फॉर्म फॉर एशिया एंड पैसिफिक, कहाँ पर? रियाद, सऊदी अरेबिया में। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ रिसेंटली वन द 34th व्यास सम्मान इन रिकॉग्निशन ऑफ द नॉवल कौन देश को वासी वेनु की डायरी विच वॉज पब्लिश्ड इन 2018? इट इज सूर्यवाला। नेक्स्ट, who were recently honored with the knighthood and damehood by King Charles III for their contribution to the film industry? knighthood men के लिए, damehood women के लिए। तो किनको सम्मानित किया गया है यहाँ पर? कौन दो रहेंगे वो, knighthood and damehood? तो क्रिस्टोफर नॉलन एंड एमा थॉमसन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने डिक्लेयर किया नाइजर एज द फर्स्ट अफ्रीकन नेशन जिन्होंने एलिमिनेट किया ऑनकोरोसिस, राइट? ऑन 31 जनवरी 2025 ये डिक्लेयर किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट आ जाते हैं, इलॉन मस्क की कंपनी है एक्स, इन्होंने अभी रिसेंटली वीज़ा के साथ पार्टनर किया ताकि P2P पेमेंट एंड एक डिजिटल वॉलेट को यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। एंड ये सारी चीज़ें लॉन्च की जा रही है ताकि एक एवरीथिंग एप्लीकेशन ये बना सके, करेक्ट? एंड ये P2P सर्विस एंड इसका नाम रहेगा क्या? डिजिटल वॉलेट का एक्स मनी। तो इन्होंने वीज़ा के साथ यहाँ पार्टनर किया। नेक्स्ट, 3 वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिन्होंने विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक, जो कि है इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, इको वहाँ से इन्होंने विड्रॉ कर लिया। कौन सी 3 कंट्रीज़ हैं? वो हैं रिपब्लिक ऑफ माली, बुर्किना फासो एंड रिपब्लिक ऑफ नाइजर। इस ब्लॉक ने भी बोला है कि इनके साथ जो इनका पासवर्ड है वो भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा एंड जो भी ट्रेड है उनके साथ नॉर्मली अभी चलने दो जब तक कोई फर्दर इंस्ट्रक्शन नहीं आती। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द कंपनी दैट रिसेंटली जॉइंड UNGC टू एडवांस इट्स कमिटमेंट टू बिकमिंग अ ग्लोबल लीडर इन सस्टेनेबल एविएशन। तो वो है GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड। नेक्स्ट, उस 13 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम बताओ बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मालदीव्स नेशन डिफेंस फोर्स, जो कि 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच में हुई मालदीव्स में। तो उस एक्सरसाइज का नाम है यूकेवरन। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कंट्री दैट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट लैटिन अमेरिकन नेशन टू विड्रॉ फ्रॉम चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो वो है पनामा। नेक्स्ट, अभी यूनिसेफ ने किनके साथ पार्टनर करके नेशनल रोड मैप टू एड्रेस रोड ट्रैफिक इंजरीज अमंग चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट्स इन इंडिया ये लॉन्च किया। तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटिंग सेंटर के साथ मिलके यूनिसेफ ने ये लॉन्च किया। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली फरवरी 2025 में फीचर किया इन द ऑनर रोल फॉर पेइंग इट्स रेगुलर बजट असेसमेंट विद इन द स्पेसिफाइड 13-day पीरियड। तो ये है यूनाइटेड नेशंस।
नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन नेवी ने अभी पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू 2025 में एंड 5वें मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो में। ये एक्सरसाइज 15 से 22 फरवरी तक हुई थी। पूछा जा रहा है कंट्री का नाम बताओ जहाँ पे दोनों एक्सरसाइज हमें देखने को मिली। तो ये कंट्री एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी, ये बाली इंडोनेशिया में हमें देखने को मिली थी। एंड इंडिया की तरफ से INS शार्दुल का यहाँ पे पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला था। नेक्स्ट, विच कंट्री सेट टू होस्ट द ब्रिक्स समिट 2025 शेड्यूल फॉर 6 से 7 जुलाई। तो ब्राज़ील यहाँ पे होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट को। कजान रशिया में हुई थी इससे पहले ब्रिक्स समिट, और इस बार ब्राज़ील में हो रही है। नेक्स्ट, नेम द कंट्री दैट बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ ओपेक। तो ब्राज़ील ही अभी नया मेंबर बन गया है ओपेक का। नेक्स्ट, इंडिया को इलेक्ट किया गया एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IALA। ये IALA क्या है? ये है आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन, राइट। एंड इंडिया यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है IALA का ड्यूरिंग द फर्स्ट जनरल असेंबली जो कि सिंगापुर में हुई थी। एंड यहाँ से इंडिया अब NGO से एक इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। नेक्स्ट, mention the country that assumed the chairmanship of Bay of Bengal program intergovernmental organization from Bangladesh during the 13th governing council meeting 21 फरवरी को। तो ये हमारी कंट्री इंडिया। नेक्स्ट, किस इंटरनेशनल ऑब्जर्वेंस ने मार्क किया 10th एनिवर्सरी सेलिब्रेटेड बाय यूनेस्को विद कैंपेन इमेजिन अ वर्ल्ड विद मोर वीमेन इन साइंस। तो ये किया गया किसके द्वारा? इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 11 फेब को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड 2015 से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ पे एक हैशटैग भी याद रखेंगे, एवरी वॉइस इन साइंस। Next, students, is your homework section. First question, what is the rank of India in the Corruption Perception Index? Which edition of this Corruption Perception Index was released and organization that released it? Then tell me who secured the first position in the Corruption Perception Index, that is the least country or the country with the least corruption. Second question, tell me Logistics Performance Index. This was released. What is the rank of India here and which is the country with first rank? Then third question, tell me recently, if I ask you which IIT partnered with ISRO to develop semiconductor for space, name that semiconductor chips also. Then fourth question, students, fourth question is cyclone exercise. This exercise is held between which two countries and right, and where was this exercise held? Then fifth question, Yash Hush. This is a product developed by Hindustan Aeronautics Limited. Can you tell me what is this Yash Hush, right? And just give me the name, right? So these are your 5 homework questions, students. I need maximum participation from all the students watching this video.